we will learn about vapor pressure. This will be one of the videos of solution chapter. So now this is vapor pressure and Raoult's law. So first of all, let's understand what is vapor pressure. Vapor pressure hota kya hai? So basically, when we look at a solution, suppose not a solution, even any liquid inside a beaker. Suppose I have taken a beaker and you can see some liquid is there, right? And इसमें दो तरह के molecule होते हैं. Number one is called bulk molecule. What is bulk? Bulk molecule is inside the solution. This is called bulk molecule. And one another type of molecules is surface molecule. So इसको बोलते हैं surface molecule. तो ये होता है surface molecule, ये होता है bulk molecule. Now what is the difference, major difference between this surface molecule and bulk molecule? That is, if I look at surface molecule, इसका एक तो होता है laser force of attraction, FOA stands for force of attraction. So laser force of attraction and more kinetic energy. Laser force of attraction and more kinetic energy. What does that mean? मतलब जो surface molecules होगा वो ज़्यादा मतलब उसका movement सबसे ज़्यादा होगा rather than bulk molecule. So इसका movement ज़्यादा होगा. अगर ज़्यादा होगा तो इसका pressure भी कम होगा और इसका क्या prepare होगा? That is called vapor. So let's go to the next slide. So as we can see, so you have taken a closed vessel. This is called closed vessel or closed container. So vapor pressure open vessel पे कभी नहीं होता, ये होता है only closed vessel पे. So if I look at the closed vessel, यहाँ पे एक कोई भी solution, कोई भी let's say liquid है, that is A, liquid A. Now we are talking about the surface molecule. We are not interested in the bulk molecules. We are only interested in the surface molecule. So this is surface molecule. Surface molecule say, as you can see, there are two types of processes going on, right? So first is evaporation, second is condensation. Evaporation, condensation, evaporation, condensation. After this process, after some time, the liquid and its vapor, here its vapor will come in equilibrium, and this is called the equilibrium, which is called liquid vapor equilibrium after some time. So after some time of evaporation and condensation, constant evaporation and condensation, it will come in equilibrium. So what is vapor pressure? This is vapor pressure. That is the pressure of the vapors. Pressure of the vapors. These are vapors. So the pressure of vapors above the surface is called vapor pressure. Vapor pressure of what? Vapor pressure of this liquid. Now the thing is, if the liquid is A, suppose the liquid is A, any kind of liquid it could be toluene, it could be benzene, it could be anything. So अगर ये A liquid है, तो इसका जो vapor pressure होगा ना, वो होगा PA naught. Now why I have written PA naught? PA naught means pure vapor pressure of A. That means in this beaker we have only A, that is pure A, no mixing, nothing is there, right? So it is called pure vapor pressure of A. Now if I write B, so it will be P naught B, that is pure vapor pressure of B, in this way. Now here few factors are there. What are the factors? That is the vapor pressure depends on these factors. So first is, it does not depend on shape or size of the container. Container कुछ भी हो, shape कुछ भी हो, size कुछ भी हो, it will not depend on the size or shape of the container, because हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए only the liquid, only the molecules, right? Not the container. So it will not depend on the shape or either size of the container. Next, ये तो first factor हो गया. Second factor क्या है? That is, it depends on the nature of the substance used. अंदर क्या substance है? Either it is benzene, ethanol, methanol, what is it? उसके ऊपर डिपेंड करेगा the vapor pressure. Suppose I have taken 3 beakers, अलग अलग 3 beaker. एक में है ethanol, as you can see, first में है ethanol, second में है glycol, and third में है glycerol. Ethanol, glycol, glycerol. What is the difference? You can see. Ethanol में एक OH group होता है alcohol moiety, second glycol में 2 alcohol moiety होते हैं, and glycerol में होते हैं 3 alcohol moiety, right? Now, if I talk about ethanol, यहाँ पे क्या होगा? एक इथानॉल मॉलिक्यूल के साथ दूसरा इथानॉल मॉलिक्यूल का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल? ओनली 1, बिकॉज एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना? एक इसके साथ होता है, इसके साथ, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके रेस्पेक्टिव. यहाँ पे और भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज्यादा, देन ये, देन ये. देन इफ आई आस्क व्हाट इज द vapor pressure of these 3 substances in increasing order, can you tell me that? Yes, so vapor pressure of glycerol will be least, then आएगा ये vapor pressure of glycol, and last आएगा, मतलब सबसे ज्यादा आएगा vapor pressure of, this is vapor pressure P,
So ethanol. Now why? Because vapor pressure is inversely proportional to the force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, उतना ही कम मूवमेंट होगा, उतना ही कम वेपर पैदा होगा, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में क्या होता है? ग्लिसरॉल में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई. नाउ अगर ये वेरी हाई है सो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, सो दिस विल बी हैविंग द लीस्ट वेपर प्रेशर. अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये होता है वेपर प्रेशर का ऑर्डर, एंड इट विल डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें. थर्ड, vapor pressure is directly proportional to temperature. Suppose I have a beaker and if I increase the temperature, क्या होगा? जितना temperature बढ़ेगा उतना ही evaporation increase होगा, उतना ही ज़्यादा evaporate करेगा, right? We have temperature, suppose the temperature is very high, we are sweating. What is that? Evaporation हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा evaporation. So evaporation के कारण vapor pressure भी increase होगा. So this will be the graph. This will be the graph. Vapor pressure and temperature, it's increasing. Right. So these are the factors on which vapor pressure will depend on. So we have seen what is vapor pressure, what is pure vapor pressure of a solvent, let's say water or anything. It could be any kind of liquid or anything. And the third thing is we have seen the factors the vapor pressure depends on. Now after this we have few systems of solution. Now what is solution? We all know solution is nothing but the mixture of two substances. One is called solute, one is called solvent. Now what is solute? We know solute is the particular substance that is present in least amount or lesser amount, right? So और solvent क्या होता है? Solvent होता है जो ज़्यादा amount में present होते हैं. Solute क्या होते हैं? जो कम amount में present होते हैं, right? So solution जो होता है ना, उसके दो प्रकार का system होता है in kind of vapor pressure. Let's look at it. ये होता है फर्स्ट सिस्टम 1, सिस्टम 2. इफ आई लुक एट सिस्टम 1, इट विल हैव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा, दोनों ही वोलाटाइल है. सपोज आई हैव एडेड वाटर एंड इथानॉल, इथानॉल इन वाटर. सो इसमें क्या हो गया? इथानॉल हो गया लिक्विड, सॉल्यूट, एंड वाटर हो गया सॉल्वेंट. ना अगर देखा जाए तो इथानॉल एज वेल एज वाटर बोथ आर हैविंग द volatility, right? So both are volatile. So this will be the system 1 of our next thing, and system 2 will be solute will be non-volatile and solvent will be volatile. Now if I talk about volatility, so as for example volatile क्या क्या हो सकता है? इथानॉल, वाटर, ये सारे होगा volatile. Now if I talk about non-volatile, then let's say यूरिया, ये जितने भी होता है ना, ये होता है नॉन वोलाटाइल. और इनके केस में वेपर प्रेशर कितना होता है? वेपर प्रेशर P0 इक्वल्स टू 0. वाई 0? बिकॉज दे आर नॉन वोलाटाइल. वेपर प्रेशर तो पैदा ही नहीं होगा कोई भी वेपर, अगर वेपर ही नहीं है तो प्रेशर कैसे होगा? सो इसलिए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस पे वेपर प्रेशर हमेशा होता है 0. नाउ अगेन रिमाइंडर, व्हाई आई हैव रिटन P0? बिकॉज इट इज द प्योर वेपर प्रेशर. प्योर, कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दिस थिंग, राइट? So this will be the system 2. Now we will be talking about system 1 first, then system 2 will come later. So let's talk about the system 1. क्या था system 1? That is solute and solvent both will be volatile. Let's talk about it. So this is the solute. Suppose this is solute and this is solvent, or you can say this is solute, this is solvent. So generally इसमें ना B हम लेंगे solute को and A लेंगे solvent को, ठीक है? So solute, solvent. Now both are having this volatility nature, right? So ये भी है volatile, ये भी है volatile. That means इस पे भी vapor पैदा होगा, इस पे भी vapor पैदा होगा, right? So इसका जो vapor है that is P0B. That means pure vapor of B. This is P0A. That is pure vapor of A. Pure vapor of B. Pure vapor of A. Now it is pure. Till this point it is pure because it is not having any foreign substance. Now I have mixed these two. मैंने ये दो को मिक्स कर दिया. क्या होगा? Solution पैदा होगा from this. So this is the solution of A and B. Can you see? A, B, both molecules are there here. Finally, ये जो vapor होगा ना, ये vapor, this vapor will be of A and B both. Right? A का भी है उसमें थोड़ा सा portion, B का भी है. Now we can write the vapor pressure of A is PA, vapor pressure of B is PB in this solution. Earlier it was pure, these are pure. Pure vapor pressure of B, pure vapor pressure of A. But this is not pure, this is mixed.
सो इसके लिए पीए पीबी अलग अलग होगा ना। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब एक टोटल सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, नॉट दिस प्योर। Partial vapor pressure of A is directly proportional to the amount of A. जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा ही A का वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा B होगा उतना ज्यादा ही B का वेपर प्रेशर होगा। Now if I talk about A, that is partial vapor pressure of A in this solution, क्या होगा? वो directly proportional होगा to the amount of the A, right? So A का amount कैसे denote होते हैं? Mole fraction से. This is called mole fraction of A, XA, right? XA. So this will be the mole fraction. That means partial vapor pressure of A will be directly proportional to the mole fraction of A. Same, partial vapor pressure of B in the solution will be directly proportional to mole fraction of B. This is called Raoult's law. So what is Raoult's law? In a solution, I'm talking about solution. In a solution, partial vapor pressure of each the component, partial vapor pressure of each the components will be directly proportional to their respective mole fractions. That means partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B will be directly proportional to their respective mole fraction. That is, PA is directly proportional to XA, PB is directly proportional to XB. This will be the Raoult's law. Now we have to solve this. How? See, PA is directly proportional to XA. Now if I want to remove this sign, this proportional sign, and if I want to include a equal to sign, what will happen? I have to write equal to and a constant, that is K, right? Now I have to find out the value of K. What is K? So let's assume something. So suppose that is pure A. Suppose this is pure A is present. Pure A is present. That means only pure A is there. No kind of B, no kind of C, nothing. Just pure A. So in that case, XA का value कितना होगा? XA का value होगा 1. Because अगर total A ही है तो mole fraction of A कितना होगा? 1 हो जाएगा final. Because हमें तो ये पता है ना that XA plus XB मतलब सब mole fraction को मिला के कितना होता है? 1. अभी only A है, कोई भी B नहीं है, that means ये 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो गया तो XA कितना हो जाएगा? 1. So XA will be 1. Then we can write PA will be equals to P not A. That means जो भी वेपर प्रेशर ऑफ A होगा वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A होगा, बिकॉज सिर्फ A है ना, इसलिए. सो PA will be equals to P not A. Therefore we can write P not A equals to, we are plugging in these values in this equation. So K की जगह क्या होगा? अच्छा, ये K हो जाएगा into X से हो जाएगा 1. So that means K का वैल्यू आ गया P not A. Therefore we can just write PA, that is this, equals to K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P not A. So PA equals to P not A into XA. ये हो गया Raoult's law. And also similar in the case of B, I can also write PB equals to P not B into XB. Okay, ये A के लिए, ये B के लिए, दोनों ही होगा Raoult's law. So these are the final form of Raoult's law. So कहाँ से आया ये आया इधर से, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, through these steps. Okay. So after this, there is called Dalton's law. Dalton's law is nothing. Suppose I have pressure, like I have a beaker, just like the last slide. I have a beaker having A and B both. So A का भी वेपर है, B का भी वेपर है, दोनों का प्रेशर है, दोनों का प्रेशर मिला के टोटल जो प्रेशर होता है, that is called Dalton's law. That is total vapor pressure of the system will be equals to partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B. Now from Raoult's law we know what is A. PA is nothing but P not A into XA. So you can just plug in the value here, P not A into XA plus PB क्या होगा? Same P not B into XB. Okay. So Dalton's law क्या होगा? P total equals to P not A into XA plus P not B into XB. In this way we can write. Also we can just modify this like P not A into XA plus P not B into XB के जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1 minus XA, because XA plus XB, that is total mole fraction कितना होता है? 1. So हम ये भी लिख सकते हैं 1 minus XA. Okay, so this will be the Dalton's law. So Raoult's law is done.
Dalton law is done, and vapor pressure is also done. Now we are talking about the system 1, right? now यहाँ पे एक ग्राफ है, राउल्स लॉ का ग्राफ है बेसिकली, ये राउल्स लॉ का ग्राफ, राउल्स लॉ। अच्छा, अभी ना हम आइडियल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन, ओके, नॉन आइडियल सोल्यूशन बाद में आएगा, अभी आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ सी, राउल्स लॉ क्या है, ये पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। नाउ इस ग्राफ के जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड में क्या है, प्योर ए, दैट इज नो बी इज प्रेजेंट। अगर प्योर ए है तो ये क्या होगा, एक्स से क्या होगा, एक्स से विल बी टोटली 1 बिकॉज ओनली ए इज देयर, बी विल बी 0, एक्स बी विल बी 0। नाउ अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, और अगर इसका ग्राफ देखें तो ऐसे आएगा। वाई, सी प्योर ए और इधर क्या है, लेफ्ट राइट एंड में है प्योर बी, दैट मीन्स एक्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0 here and mole fraction of B is 1 here. Now we know that PA equals to P naught A into XA. So अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पोर्शन होगा वो होगा P naught A, right? ये जो पोर्शन होगा वो होगा P naught B, okay? P naught A, P naught B. Now I can join this graph. So ये हो जाएगा P naught A into XA और ये हो जाएगा P naught B into XB और ये क्या हो जाएगा, P total. P total, just the last slide, P total, that is Dalton's law, right? So ये होता है राउल्स लॉ का ग्राफ, दो लाइन होता है, nothing but y equals to mx, y equals to mx, that is straight line, right? Straight line की तरह ग्राफ होते हैं ये। Okay, now based on this we have a question. Till now whatever we have learned, based on this we have a question. What the question says, if 0.78 gram benzene and 0.92 gram toluene are mixed, एक बेंजीन एक टोलुइन, बेंजीन का है 0.78 ग्राम, टोलुइन का है 0.92 ग्राम, ठीक है। पहले तो ना एक काम करते हैं, जस्ट फाइंड द मोल नंबर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन क्या होगा, इट विल बी द मास ऑफ बेंजीन बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन, राइट, वी नो इट। मास ऑफ बेंजीन कितना है, 0.78 ग्राम, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, C6H6, जस्ट कैलकुलेट इट, इट विल बी 78 ग्राम पर मोल। ये हो गया बेंजीन का, दैट मीन्स अगर इसका कैलकुलेट करें तो 0.01 ये आएगा, राइट। नाउ इक्वली वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन, राइट, टोलुइन, ये क्या होगा, मास ऑफ टोलुइन, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ टोलुइन। मास क्या होगा गिवन, 0.92 ग्राम बाय टोलुइन क्या होता है, C6H5CH3, सो जस्ट कैलकुलेटेड, इट विल बी 92 ग्राम पर मोल। सो ये भी हो जाएगा 0.01 मोल, दैट इज मोल नंबर इज 0.01, ओके। इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया, इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया। अगर नंबर ऑफ मोल निकल गया तो कैन वी फाइंड द मोल फ्रैक्शन? यस वी कैन फाइंड, बिकॉज दे आर मिक्स्ड, ये बोला है ना, दे आर मिक्स्ड, मतलब एक सॉल्यूशन बना दिया। अभी सॉल्यूशन में बेंजीन कितना है, टोलुइन कितना है, उसके लिए वी हैव टू लुक एट मोल फ्रैक्शन। सो लेट्स लुक एट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दैट इज x इज डिनोटेड बाय x ऑफ बेंजीन क्या होगा, x ऑफ बेंजीन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय टोटल, एन टोटल। बेंजीन का मोल नंबर कितना है, 0.01, और टोटल मतलब दोनों का जोड़ दो, 0.01 प्लस 0.01, ये हो जाएगा 0.01 बाय 0.02, दैट इज 0.5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन इसका, राइट। ओके, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी निकल सकते हैं ऐसे, टोलुइन ये क्या होगा, सेम, दैट इज मोल नंबर ऑफ टोलुइन बाय ओवर टोटल मोल, ये भी होगा सेम, ये भी होगा सेम, दैट इज 0.01 बाय इसका टोटल कर दो, 0.01 प्लस 0.01, ये हो जाएगा अगेन 0.5। सो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्या पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, मतलब बेंजीन का भी टोलुइन का भी, दोनों का पार्शियल प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट। क्या था फॉर्मूला राउल्स लॉ का, बहुत इजी है, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन, दिस इज नथिंग बट pure vapor pressure of toluene, sorry, toluene pure
into x of toluene, that is mole fraction of toluene. कितना था इसका वैल्यू गिवन है, that is toluene, yeah, 200 millimeter of Hg. So 200 millimeter Hg into x of toluene कितना निकला 0.5. So ये हो जाएगा 10, हाँ ये हो जाएगा 100, राइट, यस 100 mm Hg. ये निकल गया partial pressure, partial vapor pressure of toluene. Now in the same way we can find out partial vapor pressure of benzene. So partial vapor pressure of benzene, that is P of benzene, ये कितना होगा, ये हो जाएगा P naught of benzene, that is pure vapor pressure of benzene into X, that is mole fraction of benzene, right? So it will be okay, so पहले ये देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना था. Okay, so इसका वैल्यू था 400 mmHg, 400 mmHg into 0.5. तो ये हो जाएगा 200 mmHg. एंड फाइनली क्या पूछा, फाइनली सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 पे ये पूछा था टोटल वेपर प्रेशर. सो P total is equals to P of benzene plus P of toluene. So this will be toluene का बेंजीन का कितना आया 200 प्लस इसका आया था 100. So total is 300 millimeter Hg. ये आ गया P total, that is Dalton's law. So you're done with the system 1, that is when solute and solvent both are volatile. Both are volatile, then this is the case. Now in the next class or next lecture we will be having the system 2, that is when the solute is non-volatile but the solvent is volatile, this case. So thank you so much for this video.